वर्तमान डेट रे सिक्योरिटी गोटे मेजर रोल प्ले करुछि सबु आडे सबु प्ले फील्ड रे इवन डिजिटल माने कंप्यूटर वर्ल्ड रे आईटी रे सिक्योरिटी मेजर रोल प्ले करुछि तो सिक्योरिटी पई डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर डिफरेंट वे रे ते माने सिक्योरिटी दउछन तो सेमति कि AWS रे कोन होछि ना हमें जो IAM टा यूज करी आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट जोटा कि तार IAM रो फुल फॉर्म है आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट थ्रू आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट will enforce the security in all the services whatever we have in AWS. AWS more than 400 services are there. तो सब सर्विस को केमिति सिक्योरिटी प्रोवाइड करिबा यूजर मैनेजमेंट करिबा यूजर सिक्योरिटी यूजर परमिशंस रिसोर्स परमिशन सर्विस परमिशन सब को केमिति मैनेज करिबा थ्रू IAM सर्विसेस ओके तो IAM विषय हमें पूरा डिटेल्स रे जानिबा IAM ता कोन आ केमिति कोन सब डिटेल्स रे ऐड करबा आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट व्हाट इज इट AWS identity and access management again is a web service obviously जे कोन सी सर्विस तमे AWS रे पाइबो सब सर्विस हला वेब सर्विस ओके जेतु हमें ताको वेब ब्राउजर किबा वेब थ्रू वेब वी आर एक्सेसिंग दैट सर्विस तो से सर्विस टा हमर वेब सर्विस हला helps you securely control access to AWS resources माने securely control access to AWS resources तमे AWS रिसोर्स को माने AWS रिसोर्स कोन जोटा कि AWS सर्विसेज ओके तमर हमें जरा सपोज जानिबा हमें कोन कर जमदी कहली मोर देन 400 सर्विसेज AWS रे अछि जरा हमें गोटे सर्विस एटी यूज कले वर्तमान जो सर्विस गोटे यूज कले धर सपोज हमें जानले S3 विषय रे राइट तो आ गोटे सर्विस अछि धर EC2 राइट आ गोटे सर्विस अछि सर सपोज ECS ओके एमती बहुत सारा सर्विस तांगर अछि राइट तो आमे ए सब सर्विस को जोटे यूजर एठी बसिछि गोटे यूजर केमती कनेक्ट करिवो सर्विस से सर्विस राइट तो हमें तो यूजर गोटे क्रिएट करिवा तो सेटा कोन गोटे यूजर अकाउंट क्रिएट करिवा तो यूजर अकाउंट को गोटे यूजर जते बळे गोटे नुवा ऑर्गेनाइजेशन को जॉइन करूछि राइट तो गोटे अकाउंट रे हम यूजर क्रिएट कले तो यूजर को बेस्ड ऑन तार रोल और रिस्पांसिबिलिटी गोटे डेवलपर गोटे गोटे ऑर्गेनाइजेशन कोन डेवलपर थांती टेस्टर थांती प्रोडक्शन सपोर्ट वाला थांती ऑपरेशन वाला थांती डेवऑप्स इंजीनियर थांती राइट डेवलपर समस्त थांती तो बेसिकली तार रोल हिसाब रे हमें ताको एक्सेस दबा access will be provided based on the roles तार रोल रिस्पांसिबिलिटी कोन तार परमिशंस कोन दियावो तो सही हिसाब रे हमें कोन करबा ना गोटे IAM यूजर क्रिएट करबा ओके IAM यूजर क्रिएट करबा तो यूजर हिसाब रे हमें ताको परमिशंस दबा राइट परमिशंस माने से ECS एक्सेस करि परिबो ना नाही S3 एक्सेस करि परिबो ना नाही EC2 एक्सेस करि परिबो ना नाही सपोज ये गोटे एडमिन सपोज नुआ जो यूजर यूज कला से गोटे एडमिन यूजर हमें क्रिएट करबा त माने एडमिन यूजर जतो हमें क्रिएट कला माने एई पर्टिकुलर लोकर एडमिनिस्ट्रेशन पावर थिबो त माने से कोन करबा ना जे कोन सी सर्विस अछि सबु सर्विस को ही कैन एक्सेस माने सबु सर्विस को एक्सेस करि परिबो मॉडिफाई करिवो सब करि परिबो ता सहित भी हमें S3 को EC2 कनेक्ट करबा EC2 को S3 कनेक्ट करबा S3 को ECS कनेक्ट करबा SCS को S3 कनेक्ट करबा ECS को EC2 कनेक्ट करबा ये प्रत्येक कनेक्ट एंड रिसोर्स कनेक्टिविटी भीतर भी फॉर यू विल यूज IAM केमती रिसोर्स मैनेजमेंट करबा यूजिंग IAM तो आइ भीतर हमें तो सिक्योरिटी देखिबा ये गोटे यूजर कर आ गोटे बाहर यूजर गोटे जे कोन सी यूजर सपोज हमें गोटे सपोर्ट यूजर या फिर डेवलपर यूजर क्रिएट कला गोटे डेवलपर सपोज गोटे डेवलपर तो डेवलपर को हम कौन दरकार डेवलपर एडमिनिस्ट्रेशन पावर दरकार नहीं कारण से माने किछि डिलीट क्रिएशन किछि दरकार नहीं तांको दरकार गोटे प्लेटफॉर्म जोटा कि से माने लिमिटेड प्लेटफॉर्म जोटा कि राइट परमिशंस रीड परमिशंस थिबो से गोटे एनवायरनमेंट क्रिएट करियो डाटा रखि परिबो जोटा कि से माने यूज करि परिबे तो हमें कोन करबा गोटे डेवलपर को S3 एक्सेस दे दबा आ गोटे EC2 एक्सेस दबा तो से माने कोन करबो गोटे सर्वर क्रिएशन हे गेला पर डेवलपर कोन करबे सर्वर को एक्सेस करिवो he can only access to the server but he cannot modify anything he can only access to the server but he cannot modify but an admin can do modifications also right an admin can do modification also तो सेति पई कोन होछला डेवलपर को हम गोटे परमिशन देले से कोन करबा ना ता फाइल सब जाके एठी स्टोर करिवो आउ एठी तार एप्लीकेशन कोड लिखिवो सरला डेवलपर एक्सेस तो ई सब पर्टिकुलर एक्सेस हम चेक करबा केमिति IAM रे हम यूज करबा हला
AWS Identity and Access Management, like IAM, is a web service that helps you control access to AWS resources. You use IAM to control who is authenticated by signed in and authorized permissions to use resources. जेमती वर्तमान बुझेली जो को यूजर आमे क्रिएट करिबा को यूजर को टाइप रो परमिशंस अछि ऑथेंटिकेट करि परिबो किए लॉगिन करि परिबो आर कार को प्रकार रो एक्सेस अछि तो सेटा आमे आईएम रे बनी तापरे आईएम इज यूनिवर्सल अगेन आउ को सर्विस यूनिवर्सल एबे पढिले राइट S3 S3 is universal तो IAM is universal तो तुम क्वेश्चन पचारि परंती AWS रे को सर्विसेज आर यूनिवर्सल व्हाट आर द सर्विसेज आर यूनिवर्सल इन AWS तमे दीटा देखले फर्स्ट देखले S3 देखले बर्तमान IAM आल्सो भी देखले कि IAM is universal means it does not apply to region IAM is universal it does not apply to any region माने थरे गले गले को रीजन को अप्लाई माने सब रीजन को अवेलेबल जेमति कि S3 सब रीजन जेमति हमें S3 गोटे ना क्रिएट कले that is available for all over the region so IAM create kale mane this is available for all region the root account created when first set up your AWS account tame to first AWS account set up karibo right jo email id use kalo se email id hala tamaro root account and that has complete admin access jo root account hela jo email id hela that has complete admin access new users have no permissions when first created so new users have no permissions when first created जेतबले remember is a bullet point mu jo कहूची तुमको root account is the account when created you first set up the AWS account normally root account admin पाखरे थाए किंबा मैनेजमेंट पाखरे थाए new users have no permission when first created माने तमे तो नुआ AWS user गोटे क्रिएट कलो राइट तार बाय डिफॉल्ट किछि परमिशन न थाए नो परमिशंस त हमहु कोन होबना परमिशन दबाको पड़िबो new users will be assigned with access key id and secret access key when first created तो based on the user type हमें तो user create करिबा तो हमें access key id और secret key ताको एक्सेस दबा जोटा कि समान यूज करिवे प्रोग्रामेटिकल तो हमें फर्स्ट देखिबा डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेस करियबो जेमति कंसोल एक्सेस आ उडेला प्रोग्रामेटिकली एक्सेस तो कंसोल एक्सेस जोटा कि हमें थ्रू वेब कंसोल जेमति aws.amazon.com कले लॉगिन कले यूजर आईडी पासवर्ड देले लॉगिन कले सब सर्विस की कंसोल रे देखिले आ गोटे अछि कि थ्रू एक्सेस की आईडी एंड सीक्रेट की एक्सेस की आईडी हला गोटे आईडी माने अल्फा न्यूमेरिक आईडी सीक्रेट की जोटा कि तमे प्रोग्रामेटिकली माने गोटे किछि प्रोग्राम लिखिछो प्रोग्राम रे तमे चाहूचो AWS को रिसोर्स को कनेक्ट करिवा पा राइट तो सेठी कोन कोन तो प्रोग्राम रे कनेक्ट करिवो जेमति कि मेटी गोटे सिंपल एग्जांपल तुमको आ गोटे दउची सपोज तमरा सिंपल S3 पर्टिकुलर सपोज S3 बकेट अछि ओके S3 बकेट अछि तो गोटे यूजर चाहूची login kariba pai wants to log in so two ways he can log in so one is AWS console right that is our UI user interface through user interface he can log in and another way he can log in is okay another way he can log in is through CLI command line interface right through command line interface तो UI AWS console पाई आप कौन दरकार है हमको दरकार है यूजर आईडी आउ कौन दरकार है पासवर्ड यूजर आईडी और पासवर्ड दरकार कनेक्ट करिया पे कनेक्ट हे गला बट जेतो CLI कमांड लाइन थ्रू कमांड लाइन से कनेक्ट करछि ता पे कौन करबा ना से प्रोग्राम लिखिबो कौन करिवो प्रोग्राम लिखिबो ता कोनसी कमांड यूज करिवो तो ता पे से प्रोग्राम लिखुची सेठी से कौन करिवो ना एक्सेस की आईडी एक्सेस की आईडी और सीक्रेट की ए दुईटा जाक एटी से मेंशन करिवो
then he can able to connect to the माने ए जो एक्सेस की आईडी कहार ए दीटा बिलोंग्स टू द यूजर तो आम यूजर क्रिएट करबा यूजर पाई यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करि परबा प्लस ता पाई सीक्रेट एक्सेस की आईडी और सीक्रेट की भी क्रिएट करि परबा तो एक्सेस की आईडी और सीक्रेट की कोन करबा से प्रोग्रामेटिकली गोटे प्रोग्राम बनै करी ऑटोमेशन जेतो आमे करिवे तो केमिति एटा कोन कला पर्टिकुलर ऑटोमेशन करबा पाई तो ऑटोमेशन जेतो करबा से कोन करबो गोटे प्रोग्राम लिखिबो एपीआई बनेबो तो से एपीआई को केमिति से कनेक्ट करिवो S3 को थ्रू प्रोग्रामेटिकली द अदर वन इज द how we can connect directly to the console तो एठी हमर काम हैला थ्रू IAM आमे डिसाइड करिबा जो यूजर जॉइन करिछि वर्तमान ये पिलाटा माने कोन काम है व्हाट इज द रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी सपोज ही इज एडमिन सपोज ही इज ए एडमिन he is an admin so admin पाखरे सब एक्सेस बेसिकली थाए तो आमे कोन करबा ना ताकू बोथ कंसोल एक्सेस as well as CLI एक्सेस भी दे दबा माने कोन करे से प्रोग्राम भी लिखि ऑटोमेट करिवो प्लस कोनसी प्रॉब्लम हेले कंसोल भी एक्सेस करि परिबो बट गोटे डेवलपर रो काम कोन जदि गोटे डेवलपर रहिला ता काम कोन हो से कोन करिवो थ्रू CLI कारण ये प्रोग्राम लिखिवो राइट थ्रू ही ओनली नीड CLI एक्सेस आकु आकु कंसोल एक्सेस दरकार नहीं तो आमे आकु कंसोल एक्सेस दबानी तार यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करबानी थ्रू CLI ही कैन कनेक्ट टू द सिस्टम राइट तो सेति पई से कोन कहि छी न्यू यूजर विल असाइन्ड विथ एक्सेस की आईडी कि जदि हम बेस्ट on सेटा भी सिलेक्ट करबा तमरो रोल हिसाब रे तुम जाको क्रिएट करूछ कोन तार रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी इट इज advisable to always set up the MFA हमें समस्त जानी छै MFA मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोन गुड एग्जांपल दे परियो MFA मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जदि मोबाइल रे हमें देखु छै मोबाइल रे तमे कोन करछो तमरो पिन यूज करछो पासवर्ड यूज करछो फेस आईडी फिंगरप्रिंट सब यूज करछो सेटा कोन कला वन टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशंस केवल थरे ऑथेंटिकेट कलो एंट्री कलो बट थरे एंट्री कला परे तमे देखियो आउ कोनसी एप्लीकेशन यूज कला पे सोनो ओटीपी मागन राइट जब गोटे मोबाइल एप्लीकेशन धर तमे गोटे कोनसी धर योनो ऐप कि कोनसी एसबीआई ऐप हो कि एचडीएफसी कोनसी बैंक लॉगिन करछ तो लॉगिन कला बळे फर्स्ट कोन तमे यूजर आईडी एंड पासवर्ड दोछ तापर से कोन करछि गोटे टोकन कोड पठौछि ओटीपी पठौछि ओटीपी हमें एंटर करिया पड़िबो ता माने कोन सेकंड लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन फर्स्ट ऑथेंटिकेट कले को तरे हमें फिंगरप्रिंट हो कि हमरो फेस आईडी हो कि हमरो पासवर्ड देई कि हम एंट्री कले फर्स्ट एंट्री कले धर मोबाइल एप्लीकेशन हमें लॉगिन करछे फर्स्ट पासवर्ड दे एंट्री कले देन ओटीपी मागुछि ओटीपी देले नले आजिकली माने ओटीपी छडा से माने कोन करछन हमरो थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन अछि जोटा कि ता द्वारा हमरो प्रति सेकंड को गोटे न्यू 6 डिजिट कोड जनरेट होछि तो सेही कोड टाको हमें देले से ऑटोमेटिक ओपन हो तो सेही कोड सहित दबा पई हेले हमको से एप्लीकेशन सहित से ऑथेंटिकेटर ऐप को लिंक करबा सेटा मु बुझे देबी परे तो एटा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेकंड टाइम वी आर ऑथेंटिकेटिंग मल्टीपल टाइम्स वी आर ऑथेंटिकेटिंग दैट मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशंस राइट इन योर रूट अकाउंट तो रूट अकाउंट रे सब बेले एडवाइजेबल होछि जे तमे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कारण रूट अकाउंट होछि बहुत पावरफुल जा द्वारा कि जदी कि गोटे मिस माने कि गोटे हैक कर देला कि कोनसी माने मिसचिप पिला कि गोटे पाई गला तको माने से तक चाहेबो हार्म करिया पे he can delete your account he can delete everything right he can delete everything so features next comes features kon features are सब अछि shared and centralized access to your AWS account feature la shared and centralized access to your AWS account granular permissions multi-factor authentications to your account provide temporary access for users whenever required so जेतबेले हमको required हमें temporary access दबा धर हमको गोटे दरकार कोनसी पिला जॉइन का तर टेम्पररी एक्सेस फाइंड किछि दिन पे एक्सेस दरकार गोटे अलगा टीम को गोटे पिला आसला 1 सेकंड
ओके सो टेम्परेरी एक्सेस केतोले जेतोले गोटे धर गोटे अलगा टीम रु तम टीम को गोटे पिला आसला किछि पर्टिकुलर किछि दिन पई काम सेटअप करबा पई किछि डेटाबेस पिला आसला कोन तो आमे कोन करबा ना टेम्परेरी एक्सेस गोटे क्रिएट करी ताको दे दो तो से एक्सेस करी टेम्परेरी किछि दिन पई यूज करबा तापर तंगा एक्सेस ता पळेबो राइट टेम्परेरी एक्सेस आमे दे परिबा नेक्स्ट कम्स की टर्मिनोलॉजी मन रखिताओ हमर रोची यूजर्स ग्रुप्स पॉलिसीज रोल्स जो रोल्स ता हमें वर्तमान S3 रे कला बेले देखिथिले राइट ता विषय में तुम बते देबी रोल्स ता कोन यूजर्स हला एंड यूजर सच एज पीपल एंड एम्प्लॉइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस माने कोन से ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉई काम करी से एम्प्लॉई रो यूजर्स क्रिएट करिवा तो तार कोन कोन यूजर्स सब यूजर अकाउंट क्रिएट करिवा तापर ला ग्रुप्स ता कोन कलेक्शन ऑफ यूजर्स माने एटी एक्चुअली बेसिकली बुझिवा दरकार गोटे यूजर्स काम कोन गोटे हमें यूजर्स क्रिएट करवा राइट धर गोटे यूजर आईडी मु क्रिएट कली रंजित के गोटे यूजर आईडी एटा मोर यूजर आईडी तो आउ धर गोटे अच्छे धर सतीश धर शुभश्री राइट शुभ so 3 users mu kali separately there are suppose Ranjit K is a developer he is an admin Satish is an admin and suppose Subha is a tester okay so what happened here we have 3 users have different roles developer admin tester and all okay so suppose tomorrow another person joined Ramesh okay suppose he is also developer right so आमे जेतले फर्स्ट मु रंजित क्रिएट करथिबि यूजर आईडी डेवलपर हिसाब रे तो मु आपको किछि परमिशंस दिया हितिबो राइट तो मोदी आर क्रिएट करबि इंडिविजुअली यूजर आईडी तो कोन करबि ना individual permissions maybe right same permissions whatever Ranjit will have same permissions will have the Ramesh also what happens here another people join another developer so I have to again have to give the same permissions to that person so every time the person joins a new person joins to the team I have to give the permissions right individual permissions instead of going individual permissions to this user what I can do I can create a group से ग्रुप रे कौन करबी ए जो परमिशंस अछि मु कौन करबी एक से ग्रुप रो सही पर्टिकुलर परमिशंस ता मु देई देली गोटे ग्रुप आईडी क्रिएट कर देली से ग्रुप आईडी रे से ए जो जहा परमिशन डेवलपर पई दरकार है जहा परमिशंस डेवलपर पई दरकार मु देई देली तो वर्तमान ए जो दीटा डेवलपर को मु इंडिविजुअली तांकू परमिशंस न देई कि मु कौन करबी ना अटैच कर देबी कि ए ग्रुप आईडी तो बर्तमान एक ग्रुप रो कोन हैला गुटे ग्रुप कोन हैला ए ग्रुप इज ए कलेक्शंस ऑफ यूजर्स नंबर ऑफ यूजर्स जो नंबर ऑफ यूजर्स माने नेक्स्ट धर आउ जने गुटे पिला जॉइन हैला सपोज सुबो टेस्टर रु डेवलपर बनि हैला तो आपको डेवलपर परमिशंस दरकार तो कोन हबो वी कैन प्रोवाइड जस्ट मते कोन करियार अछि गुटे ग्रुप ना रे ऐड करियार अछि राइट तो ग्रुप होची ग्रुप ऑफ यूजर्स गोटे नंबर ऑफ यूजर्स आर एडेड टू द ग्रुप तो आमे पर्टिकुलर स्पेसिफिक एडमिन धर 50 जन अछन 50 जन को इंडिविजुअल एक्सेस दबा अपेक्षा गोटे ग्रुप कर देली से ग्रुप को से 50 जन ऐड कर देली काम सरला से 50 जन को गोटे ग्रुप ऐड त माने किछि गोटे परमिशन चेंज करियार अछि तो मते कोन चेंज करियार अछि मते से पर्टिकुलर ग्रुप रे चेंज कर देबी ना कि मु इंडिविजुअली जाई कि 50 जन को चेंज करबी मु जाई कि पर्टिकुलरली से ग्रुप रे चेंज कर देले कोन से ग्रुप रे एठी मु जहा चेंज करबी all that will reflect to that users okay admin ही करियो ए सब काम admin ही करियो जड क्लाउड एडमिनिस्ट्रेशन हां बेसिकली देखो जे कोनसी गोटे काम स्टार्ट करिया पूर्व गोटे पिला ही स्टार्ट करियो ना काम तो से गोटे पिला धर गोटे एडमिन जॉइन कला तो धर गोटे सिंगल पिला गोटे टीम रे जॉइन करछ एडमिन से एडमिन जेतले क्रिएट करछ तार निजर अकाउंट से क्रिएट करथियो ऑब्वियसली जेतु मु गोटे वर्तमान कंपनी सेटअप कली तो वर्तमान मु जेतु फर्स्ट ओनर और मु ही एडमिन
तो फर्स्ट मु अकाउंट क्रिएट करबी रूट अकाउंट का पाखे रहबो मो पाखे वर्तमान तम अकाउंट रो ओनर किए तम वर्तमान किए एडमिन तमे चाहूछ धर मु तम अकाउंट सहित जोड़िबा चाहूछ कि तम सहित तम कंपनी सहित जॉइन करिया चाहूछ तो धर आउ 5 जण पिला आसिले तमे चाहूछ से 5 जण पिला तमे एडमिन रोल दबो तो तमे कोन करियो तमे सुपर एडमिन जणे सुपर एडमिन थियो जे कि रूट अकाउंट ताको सुपर एडमिन तो सुपर एडमिन कोन करबे ना गोटे ग्रुप क्रिएट कर दो से ग्रुप एडमिन ग्रुप रे आ बाकी जो 10 जण जॉइन करे ताको ऐड कर तो बाकी instead of going individually creating all the admin user accesses से कौन करियो गोटे ग्रुप रे ऐड कर दो तो ग्रुप रे परमिशंस पाई गला राइट सेमती जदी खाली एडमिन नो खाली डेवलपर भी आसले तो गोटे डेवलपर ग्रुप कर देला गोटे टेस्टर ग्रुप कर देला गोटे प्रोडक्शन सपोर्ट ग्रुप तो सेही ग्रुप को सेही पर्टिकुलर टीम रे जो जो पिला को जा जा एक्सेस दरकार ताको धरै देला तो सरला राइट रोल बेस्ड कनेक्टिविटी एटा बेस्ट बेसी आदरे किछ नै की टर्मिनोलॉजी एतिक रहला तब रोल बेस्ड कनेक्टिविटी रहउची roles are more secure than storing your access key and secret key on individual EC2 instance तो वर्तमान आमे जदी ओके रोल्स जानिबा आगु आमे धरो सपोज आमे यूजर आईडी ओके यूजर की यूजर आईडी और पासवर्ड विषय कथा तो यूजर आईडी पासवर्ड जतो कोन ना इटा सिंपल टेक्स्ट लाइक सपोज मो यूजर आईडी ला सपोज रंजीत के आ पासवर्ड सपोज दली abc@123 एटा ला यूजर आईडी एटा ला पासवर्ड तो एटा ला कोन प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट तो मुझे तो एटा प्रोग्रामेटिकली कोड यूज करबी तो कोन करबी गोटे प्रोग्राम रे मोर लिखिबी मो यूजर आईडी पासवर्ड राइट मो यूजर आईडी और पासवर्ड लिखबी तो एटा कोन टेक्स्ट फॉर्मेट रे इजीली विजिबल तो आकु मु ए दीटा को मु कोठी गोटे जगह रे स्टोर करी रखिबी कोन रंजीत के आउ abc@123 ए दीटा मु गोटे जगह रे स्टोर करी रखिबी जदी मु प्रोग्रामेटिकली रन करिया को चाहूची तो एटा गोटे रिस्क काम जदी प्रोग्रामेटिकली मु यूजर आईडी पासवर्ड रखली या फिर एक्सेस की आईडी आउ सीक्रेट की तो एक्सेस की आईडी और सीक्रेट की भी दीटा को टेक्स्ट राइट आमे इजीली ताको व्यू करि परिबा तो ई दीटा कोन ना जदी आमे गोटे जगह रे स्टोर करि कि रखिले तो इटा somebody it is possible that someone can steal this one it can be stolen right someone can steal it and can do some harm to your account आकु अवॉइड करिवा पई त आमे कोन करिवा यूज करिवा रोल बेस्ड कनेक्टिविटी तो रोल बेस्ड कनेक्टिविटी रे कोन होची roles are more secure than storing your access key and secret key individual तो roles रे कोन होची ना जेटोटा सिक्योर मोर देन एक्सेस की और सीक्रेट की हम स्टोर करिया अपेक्षा रोल क्रिएट कर तो रोल रे बेसिकली हमें कोन करछ ना पर्टिकुलर बेस्ड ऑन द रोल सपोज डेवलपर रोल कि एडमिन रोल तार जो एक्सेस दरकार है तो रोल बेस्ड सेही पर्टिकुलर परमिशंस एक्सेस गोटे रोल क्रिएट कर दले ताको सेही लेवल एक्सेस धराइ दे ता माने सी सेही रोल टाको नै करी ही सब एक्सेस करि पारि ताको जो रोल स्पेसिफाई कराइ तो रोल आईडी क्रिएट कराइ तो पर्टिकुलर सेही रोल ही मु धर मु डेवलपर मते धर पर्टिकुलर रोल दियाइ केवल S3 एक्सेस दियाइ ठीक केवल EC2 रीड परमिशन दियाइ तो मु केवल S3 रीड एक्सेस आ EC2 रीड एक्सेस ही करि पारि ता द्वारा हम किछि करि पारि हला roles can be assigned to EC2 instances after it is created using both command line and console roles can be assigned to EC2 instance तो हमें EC2 instance को रोल दे देला माने जे नै से जा जो रोल दबा से सही रोल हिसाब रे कनेक्ट करे roles are easier to manage it is easy to manage obviously तमे access key id and secret key जदी रखिबो तो लिटिल डिफिकल्ट ताको मैनेज करबा ता गुड जगह स्टोर कर रखबा ताटो बेटर हमें गोटे रोल क्रिएट करी ताको roles are easier to manage also roles are universal okay roles IAM users IAMs right IAM is universal means IAM under comes IAM user group role सब universal right okay IAM रो भी documentations अछि okay IAM रो documentations
आईएम टा एक्चुअली मु तुमको कहबी जे आईएम पर बेसी तमे कंसंट्रेट करो आईएम रो जस्ट थियोरेटिकल मु तुमको जस्ट ऊपर ओवरव्यू कर देले हम तार प्रैक्टिकल करबा हैला लैब क्लास करबा ता पूर्वरु मु तुमको कहि दउची आज रो क्लास बस एतिकी तमे आप पूर्वरु वर्तमान आईएम रो ये जो लिंक ता तमे तुम देबी ये लिंक ता आईएम रो कंप्लीट आईएम डिटेल्स सी अवेलेबल कमांड्स एटा आईएम रो अवेलेबल कमांड रेफरेंस कौन कौन कमांड यूज होची तमे कोन करबा ना आईएम रेफरेंस को आईएम यूजर गाइड को जीवो हैला AWS IAM documentations okay so docs.aws amazon.com IAM user guide AWS CLI reference बहुत अच्छी जदि हमें आईएम पढ़िबा एमती राति पाई जो पूरा माने एमती 1 वीक ऊपर लागियो केवल आईएम ता कंप्लीट करियो क्लाउड ठीक अछि यूजर गाइड को जीवो यूजर गाइड रे आईएम रो केमती कोन यूज कराउची डिटेल्स अछि टोटल सब बुझे दे यूजर कोन ग्रुप कोन विषय मा आइडेंटिटीज केम करिवो why should I use IAM काहे की यूज करियो बतली जंती सिक्योर एक्सेस मेंटेन करिबा पई and the securely connectivity between the AWS resources बडा कोन तुमको गुटे सेंटेंस दुईटा सेंटेंस रो बुझली तमे आहुरी मोर एलाबोरेटिवली तमे डीप डाइव करिबा गले तमे डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करिवो आ निजे प्रैक्टिस करिबा पड़िबो राइट तो ये डॉक्यूमेंटेशन से तमे कोन पाइबो what you'll get it here AWS identity is powerful tool for securely managing access to your AWS resources जोटा हम कहली वर्तमान and one of the primary benefit of using IAM is the ability to grant shared access to your that shared access means granular permissions जोटा हम कहली share access to the AWS account additionally IAM allows you to assign granular permissions and shared access enabling you to control exactly what you want okay granular permissions कौन you can grant different permissions to different people for different resources जोड़ा बुझे देबे को रिसोर्स पे कौन परमिशंस दरकार है granular permissions different type of different permissions to the different users okay मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशंस ऑलरेडी हम बुझी सारे ये सब डिटेल्स ऊपर बुझे छी तमे आउथरे जीवो हाउ आईएम वर्क्स पर्टिकुलर डायग्राम ता देखो आईएम केमती वर्क करूची ता ऊपर डिटेल्स रे तमे बुझिबो okay see AWS Identity and Access Management provides the infrastructure necessary to control authentications and authorizations for your AWS account. तो हमें जदि एक पर्टिकुलर डायग्राम टा को देखिबा let me make it full screen see what we are seeing here account ID so ये account का कोड है को account ID this is your root account ID first account ID was created right तमरो जोटा root account ID भीतर तमे जोटा बर्तन डायग्राम करी देखौतली यूजर क्रिएशन पर केमती कोन एक्सेस क्रिएट होची ता पई तमे ऑथेंटिकेशन जोटा रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन हो कि कीवर्ड पासवर्ड बेस्ड हो कि एक्सेस की आईडी की सीक्रेट की हो तो तमे गोटे प्रिंसिपल यूजर जो यूजर क्रिएट करदले से यूजर को पर्टिकुलर एक्सेस दे देलो ताको ऑथेंटिकेट पई ऑथेंटिकेशन पई दे देलो तापर रिक्वेस्ट कोन तार से रिक्वेस्ट पटेला पर तार से एक्सेस चेक करूची राइट एक्सेस केमती चेक करची जो पर्टिकुलर एक्सेस हम तक प्रोवाइड करछे से माने सब तार कोन बैकएंड रे तुमको किछ करियो पड़ियो सब ये सब जा होची बैकएंड रे हाउ इट प्रोसेसेस ओके ऑथराइजेशन से फर्स्ट चेक करची के चेक करची धरो तमे गोटे यूजर तुमको दिया छी केवल EC2 एक्सेस राइट तमे चाहछो गोटे S3 बकेट एक्सेस करबा पे तो फर्स्ट तो तुम S3 बकेट एक्सेस करबा को चाहछो तो फर्स्ट तो ऑथेंटिकेशन मागुछो तुम रिक्वेस्ट पठाउछो तो रिक्वेस्ट कोन करबा ना IAM यूजर चेक करबो जे तुम पाकर परमिशंस लेवल तारा जो जेसन फॉर्मेट हो कि तारा जो पॉलिसी देथिबो से पॉलिसी चेक करबो वेदर तुम पाकर S3 एक्सेस अछि ना नाही जदी नाही तुमको रेस्ट्रिक्ट कर दो जे तमर एक्सेस नाही जदी अछि देन अलाउ करबो सेटा बर्तन एठी ऑथराइजेशन सेक्शन रे एक्सप्लेन करिछ राइट तो एक्शन एला पर तमर कोन एक्शन तमे नै परिबो को टाइप रो एक्शन नै परिबो कोन ऑपरेशन करि परिबो तमे सर्वर क्रिएट करि परिबो EC2 रे कि खाली सर्वर यूज करि परिबो कि डिलीट करि परिबो ए सब ऑपरेशन तमे यूज करि परिबो कोन रिसोर्स एक्सेस करि परिबो राइट ए सब डिटेल्स रे जस्ट जोटा कि तुमको बतली सब डिटेल्स रे इतरे इस स्मॉल पिक्चर रे सब बतली हला ये हला तारो यूजर गाइड ऊपर तारा डिटेल्स देछि बट बेसिकली कोन होछि ना
जते तमे प्रोग्रामेटिकली आईएम रूल यूज करिवो आईएम रूल करिवो तो मु तुमको सब बेले माने सजेस्ट करिवि जे यू शुड नो मोर प्रोग्रामेटिकली हाउ इट वर्क्स तमे जदि कैरियर केवल क्लाउड रे बनिया पई चाहूचो तो मु चाहबी तमर आईएम इन एडब्ल्यूएस सीएलआई रेफरेंस एटा हमें देखिबा हमें जेतो एडब्ल्यूएस सीएलआई पढिबा सेतबेले हमें किछिटा कमांड करिवा तार बट तुमको मु सब बेले यूज कहबी तो आर रेफरेंस आईएम रे जो कमांड सब नाही कि ये सब होला तार मैनुअल कमांड माने तमे सीएलआई रे कमांड लाइन इंटरफेस से कौन कौन सब कमांड यूज करिवो राइट ये सब प्रकार आर देखो सब जाके यूज करा पूरा डिटेल सी हाउ मेनी तुम भावुछ एटा हम जदि एबे पढिबा को सारी परिबा तो जल्दी पूरा डिटेल्स रे जदि हम जिबा तो हमको मोर देन 1 वीक केवल आईएम लागिबो केवल आईएम लागिबो मोर देन 1 वीक आ क्लाउड केवल जदि तमे कंप्लीटली एक्सपर्टाइज हबा को जाउछ क्लाउड रे ताले तुमको मोर देन 3 मंथ्स 4 मंथ्स 5 मंथ्स केवल क्लाउड रे ही लागिबो केवल क्लाउड डेवलप्स कथा छाड़ तो टोटल कोर्स 6 मंथ्स प्लस लागिबो जदि कंप्लीट क्लाउड और कंप्लीट डेवलप्स रे तमे जीवो मोर देन 6 to 7 मंथ्स लागियो सारीबा पे तो सेति पई मु तुमको जहा दोउची मोर देन एनफ जति कि तमे मार्केट जीवा जति तमे कैरियर करि परियो जति तमे काम भी आरंभ करि परियो ता छडा तमे बेसी निज आडू एक्सप्लोर करिवो एक्स्ट्रा जानिबा को चाहिबो केमति कोन हे परियो राइट तो सब बेले चेष्टा करो टू ट्राई टू मोर एक्सप्लोर तो कमांड जेतले हमें पढिबा सीएलआई रो सब जगह केमिति क्रिएट पॉलिसी क्रिएट करिवा तो पर्टिकुलर क्रिएट करे केमिति क्रिएट पॉलिसी करिवा तार सब ऑप्शन कोन सब डिटेल्स रे हमें बुझिबा ठीक अछि ओके तो फर्स्ट कोन करियो हम AWS अकाउंट को लॉगिन कला परे so we have to move to the service sections from service sections we can find the IAM service right IAM service हमें कोड पाइबा सिक्योरिटी आइडेंटिटी एंड कंप्लायंस सेक्शन राइट ए कैटेगरी हमें पाइबा तो एठी हमें देखियो जदी IAM मैनेज एक्सेस टू AWS सर्विसेज ओके और एल्स व्हाट यू कैन डू डायरेक्टली हमें एठी सर्च करि परिबा IAM सिलेक्ट सो सिलेक्शन करे हमें डायरेक्टली IAM बोर्ड रे लाइन करूचे राइट तो एठी हमें कोन करबा ना you can see here right we have one user group गोटे यूजर ग्रुप अछि पांचटा रोल क्रिएट हेछि ना गोटे पॉलिसी अछि ओके सो what we can do here user group first हमें कोन करबा let's go ahead and create one user okay last class also I had shown you right what is the benefit of activating the MFA so what is MFA कोन मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ता कोन मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमें ऑथेंटिकेशन कहूचे राइट ऑथेंटिकेट माने कोनोसी गोटे एप्लीकेशन हो कि कोनोसी गोटे माने कोनोसी कुछ भी थिंग्स हो जोटा कि हमें गोटे यूजर आईडी और पासवर्ड देके ऑथेंटिकेट करिया माने हमरो आइडेंटिफिकेशन ता हमें दबा जे हमें यही लोक हमर एक्सेस अछि एठी तो ता पे हम कोन दरकार क्रेडेंशियल्स दरकार राइट तो ऑथराइजेशंस पाई गोटे क्रेडेंशियल दरकार तमे क्रेडेंशियल फर्स्ट सेटअप कराबो तापर सेही लोक को ही सेही क्रेडेंशियल सेट देले से लोक ही जाई पर जेमति गोटे जे कोनसी गोटे ऑफिस जाओ या फिर गोटे रूम खुले तम गोटे जदी लॉक थिबो तार गोटे की तम पाके थिबो राइट ताला थले ता चाबी रखि दियो तम तो सेही की हला तार आइडेंटिटी जोटा लेकरी से जाई से लॉक ता से खोलिबो तो सेही पर हमें जदी कोनसी रिसोर्सेस हमें AWS रे यूज करबा को जाउचे तो ता पे हमको यूजर दरकार आ से यूजर पाके जे पर्टिकुलर एक्सेस की थिबा दरकार जो दर से एक्सेस करि परिबो दैट पर्टिकुलर सर्विसेज तो फर्स्ट हमें काम करबा गोटे धर सपोज एटा मोर AWS अकाउंट राइट तो ए AWS अकाउंट रे मु चाहूची किछि यूजर क्रिएट करबा सपोज कोन ना माने रियल टाइम रे हम जदी देखिबा धर गोटे ऑर्गेनाइजेशन रे गोटे कंपनी रे किछि यूजर माने एम्प्लॉई काम करिबा बसले तो से एम्प्लॉई मानकर तांकर रोल्स हिसाब रे माने से के डेवलपर थिबो के टेस्टर थिबो के सपोर्ट इंजीनियर थिबो तांका रोल हिसाब रे हमें यूजर आईडी क्रिएट करबा यूजर आईडी क्रिएट करला पर सही हिसाब रे तांको एक्सेस दबा once we created the user ID we have to provide access based on the roles what role they have right roles and responsibility so now what we have to do we have to first let's go ahead and create one user
तो एमएफए हमें जानना ऐड एमएफए जो अच्छी ऐड एमएफए फॉर रूट यूजर्स राइट रूट यूजर पे जो एमएफए हमें ऐड करबा you can go ahead and add MFA here. So why we need add MFA here? To provide extra security to the root user. Okay. So add MFA router to enable multi-factor authentication. माने कौन वर्तमान मुझे लॉगिन करी मो अकाउंट कौन कली कली ईमेल आईडी माने यूजर आईडी और पासवर्ड देली कनेक्ट हे गला बट जदी मोर यूजर आईडी और पासवर्ड का पाके रही गला तो से कौन करिवे डायरेक्टली कनेक्ट हे जिवे तो जदि मो पाखे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन थिबो जोटा कि आ गोटे ओटीपी सिस्टम थी वन टाइम पासवर्ड थिबो कि गोटे ओटीपी थ्रू कौन सी सिक्योर एप्लीकेशंस लाइक ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशंस मार्केट जोड़ा अछि तो सेटा जब यदि ऐड कर दो तो कोन हला ना हम मोबाइल रू ही जो ओटीपी आसीबो कि जो ओटीपी ऑथेंटिकेटर ऐप रे जनरेट हेतो से ओटीपी देला परे जाई ओपन हबो माने डबल ऑथेंटिकेशन रहिला टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रहिला राइट तो सेटा हमें इट ऐड एमएफए जाई तमे सेटअप करिवो तो एटा तम पई टास्क हला एटा बहुत इजी सिंपली जीवो ऐड एमएफए क्लिक करिवो ओके लेट मी शो यू तो एमएफए डिवाइस ना गोटे देलो ओके तो एटी डिफरेंट वे रे तमे एमएफए सेटिंग करि परिबो गोटे पास की और सिक्योरिटी की गोटे सेट करिवा पई एजे तमे करि परिबो तले ऑथेंटिकेटर ऐप जोटा कि ऑथेंटिकेटर ऐप जोटा मोबाइल एप्लीकेशन तमे गोटे एप्लीकेशन डाउनलोड करिवो से एप्लीकेशन रो जो टोकन से एप्लीकेशन ता हमरो AWS अकाउंट सहित मैप हबो मैप वाला पर जो टोकन जनरेट हबो से टोकन एटी पुट कले ओपन हबो तो ऑथेंटिकेटर ऐप नाले हार्डवेयर टीओटीपी टोकन माने आरएसए टोकन जो आगुर थिला गोटे जोटा ओटीपी हार्डवेयर माने तम पाखर गोटे छोटो डिवाइस थियो से डिवाइस रे जो टोकन ता पारो से टोकन ता तमे पुट करिवो तो एटा को भी मैप करबा को पड़िबो इंटीग्रेट करबा को पड़िबो राइट तो ऑथेंटिकेटर ऐप सपोज मु नेली तो नेक्स्ट ऑथेंटिकेटर ऐप जो डिवाइस नेम सपोज आई विल गिव माय डिवाइस किछि गोटे नाम दे दियो हला माय डिवाइस आसिलो नेक्स्ट तो एठी कि तुमको गोटे क्यूआर कोड स्कैन करिया दो क्यूआर कोड स्कैन तो एठी स्कैन करबा को हेले तो कोथरे स्कैन करबा तमरो मोबाइल एप्लीकेशन जो अछि से मोबाइल से नहीं तमे क्यूआर कोड ता स्कैन करिवो सो यू हैव टू स्कैन फ्रॉम द मोबाइल कोड सो मोबाइल कोड रे स्कैन करे तो मोबाइल कोड स्कैन करबा के तुम कोन करिया पड़ियो फर्स्ट यू हैव टू इंस्टॉल दैट एप्लीकेशन तुम से एप्लीकेशन ता इंस्टॉल करिया पड़ियो राइट तो एठी जदी हाँ मोबाइल रे इंस्टॉल करबा पड़ियो तो मोबाइल इंस्टॉल करे को एप्लीकेशन सपोर्ट करछि तमे जदी लिस्ट ऑल कंपैटिबल एप्लीकेशन को जिबा तो एंड्रॉइड आउट बोथ आईओएस पाई ए सब एप्लीकेशन अवेलेबल अछि जोटा कि तमे डाउनलोड करिके तम मोबाइल रे इंस्टॉल करि परिबो तो बेसिकली गूगल ऑथेंटिकेटर माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर मोस्ट ऑफ द कंपनीज माने यूज करछथि मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे आर यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर एंड गूगल ऑथेंटिकेटर ओके सिमेंटिक वीआईपी आल्सो दे आर यूजिंग तो आमे चाहबो जे तमे मोबाइल रे चाहछो जे माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर डाउनलोड फ्री अछि डाउनलोड करि परिबो गूगल माने तमे जदि एंड्रॉइड यूज करछो माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर आइदर गूगल ऑथेंटिकेटर जेकुनसी गोटे डाउनलोड कर इंस्टॉल कर दबो तो आईओएस जदि आईफोन जदि यूज करछो ताले सेम माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ता पई भी सेम एप्लीकेशन तमे डाउनलोड करी इंस्टॉल कर दो तमे तो वंस यू इंस्टॉल दैट वन व्हाट यू हैव टू डू यू हैव टू आफ्टर इंस्टॉल कौन करियो ना स्कैन करियो सेम एप्लीकेशन ओपन करियो एप्लीकेशन रो स्कैनर थिबो से स्कैनर स्कैन कला माने ऑटोमेटिकली कोन होना तमरो मोबाइल से तो से लिंक हे तो मोबाइल से तो लिंक हे गला परे तो मोबाइल रे दीटा फास्ट दीटा ओटीपी जो आसीबो 6 डिजिट ओटीपी सेटा तमे कोन करबो एटी पकेबो फास्ट आसला पकेलो 30 सेकंड वेट करिवो से ओटीपी चेंज हे जिवो आ गोटे ओटीपी जो आसीबो सेटा सेकंड ओटीपी एटी दबो ओके सेकंड ओटीपी आसी गला परे तापर ऐड एमएफए डन तमर एमएफए एक्टिवेट हे गला ओके तो इट हला तमरो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्टिव करिवो नाउ लेट्स गो एंड क्रिएट वन यूजर नाउ ओके तो हमर ऑलरेडी गोटे यूजर अछि तो मु जदी यूजर सेक्शंस को जिबी एठी गोटे अछि एडमिन यूजर ओके so let's go ahead and create one user let me show you how we can create the users गोटे यूजर ना दियो सपोज मु गोटे देबी डेमो यूजर ओके B11 डेमो यूजर B11 ओके तो से यूजर को तमे को टाइप रो एक्सेस दबा को चाहूछ तो हमें कोन करबा ना जदी माने केमती तमे डिसाइड करिवो को टाइप रो एक्सेस दबा पय केमती डिसाइड करिवो बेस्ड ऑन हिज
रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी तार रोल कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन सही हिसाब से तुम डिसाइड करबो कौन एक्सेस दिया राइट जदि से गोटे पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटर राइट जदि एडमिन यूजर जे तो एडमिन यूजर बेसिकली कौन था ना बहुत कंसोल एक्सेस माने ये जो यूआई तुम देखुचो तो यूआई एक्सेस ता सहित प्रोग्रामेटिकल जो प्रोग्राम ऑटोमेशन भी करि परियो ता पे प्रोग्रामेटिक एक्सेस भी दरकार तो तमे जदि चाहूचो ये यूजर को तमे दबा पाई AWS Management Console access, then you can select this. What it will do, it will ask you to create the IAM user, okay, and give the password. तो हमें मु चाहूनी जे यूजर को दबा पाए ताले तमे कोन कर अनसिलेक्ट कर दो हैला लेट्स गिव दिस यूजर एज मैनेजमेंट कंसोल तो मैनेजमेंट कंसोल दली तो कोन कोची नेक्स्ट कोन कोची आर यू प्रोवाइडिंग कंसोल एक्सेस टू ए पर्सन स्पेसिफाई ए यूजर आइडेंटिटी सेंटर रिकमेंडेड बट मु कोन करिबि आई वांट टू क्रिएट एन IAM यूजर मोटे IAM यूजर क्रिएट करी तो IAM यूजर ना हला डेमो यूजर B11 ऑटो जनरेटेड पासवर्ड ना मते कस्टम पासवर्ड लेट्स गिव द कस्टम पासवर्ड ओके यूजर मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड सेटा कोन कहै छै यूजर मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड एट नेक्स्ट साइन इन माने तमे नेक्स्ट जतले साइन इन करिवो तुमको यूजर आईडी और पासवर्ड डिफॉल्ट दिया हेगला तो जतले तुम फर्स्ट साइन इन करिवो एप्लीकेशन को कोन करिवो ना से तुम कहबो पासवर्ड तुमर चेंज करो कौन पाई सिक्यूरिटी रीजन रे कारण जदि मु गोटे एडमिन यूजर मु तम पई गोटे यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट कली तो सेही यूजर आईडी पासवर्ड ता कोन तुमको देली तो से पासवर्ड मो पाखर भी रहिला तो मु चाहिले भी तुम लॉगिन यूज करी किछि करि पाइबे बेसिकली करबा कथा नुवा बट जदि किए किछि चाहिला किछि लॉगिन करी तुम आईडी में किछि करबा पई अकाउंट माने मिस हैंडलिंग करिया पई तो से आराम से करि पाइबो तो सेति पई कोन करा जाय ना तो यूजर्स मस्ट क्रिएट ए न्यू पासवर्ड एट साइन इन माने तमे मु जदि पासवर्ड दे देली त तम हिसाब रे तमे गोटे पासवर्ड सेट करबो ओके तो सेही पासवर्ड ता केवल तम पाखरी रहइबो राइट तो यूजर्स मस्ट क्रिएट ए न्यू पासवर्ड नाउ लेट्स गो एट नेक्स्ट okay so कौन कहछि the password you enter does not confirm the account's password policy so password policy confirm करूनी so मु कोन करबी demo user @ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଲି demo user @123 ओके मन रखता नेक्स्ट तो गोटे ग्रुप असाइन करिया तो ग्रुप कौन पाई दरकार हमको तो एक्चुअली बेसिकली ग्रुप ता कौन ग्रुप है गोटे ग्रुप ऑफ मेंबर्स राइट नंबर ऑफ मेंबर्स वी ऐड इनटू ए ग्रुप सो केमती नंबर ऑफ मेंबर्स माने जो पर्सन्स ऐड करबा जोटा कि बेस्ड ऑन देयर रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी रे को किए डेवलपर ग्रुप गोटे ग्रुप करिया तो से माने को से डेवलपर एक्सेस दबा माने जे टेस्टर ग्रुप क्रिएट करिया तो टेस्टर एक्सेस दबा को पर्टिकुलर सर्विस ताको एक्सेस दरकार किए स्टोरेज रे काम को केवल डेटाबेस यूजर तो डेटाबेस सर्विस ही केवल यूज करबो राइट बाकी सर्विस यूज करबो तो केवल डेटाबेस एक्सेस दिया हो राइट तो मते चलो दुईटा क्रिएट करिया ग्रुप लेट्स गो अहेड एंड क्रिएट वन ग्रुप सपोज I'll give as server admin so server admin suppose the name is supposed to work on only on the server side so EC2 admin केवल EC2 ही ऊपर काम करिवो तो मु त कोन करछि ना केवल EC2 एक्सेस दबाकू चाह okay so I'm going to create one group called as server admin तो सर्वर एडमिन रे बेसिकली मु चाहूची मु जदी एठी देखो पॉलिसी नेम अछि पॉलिसी कोन पॉलिसी कोन एक्चुअली पॉलिसी माने हम जतले गोटे पॉलिसी क्रिएट करू पॉलिसी रे कोन गोटे ग्रुप ऑफ रूल्स थाए किछि गोटे रूल सेट कराइ थाए गोटे पॉलिसी रे किछि रूल्स आ एक्सेस थाए तो माने एई पर्टिकुलर पॉलिसी जदी तमे अप्लाई करिवो सेई पॉलिसी हिसाब रे सेटा काम करियो सेई रूल्स और रेगुलेशन जा सेट कराइ थि सेई हिसाब रे से पर्टिकुलर पॉलिसी ता काम करिवो तो एठी कोन होछि ना हमर AWS मैनेज्ड पॉलिसी रहउछि आ किछि रहउछि माने यूजर क्रिएटेड पॉलिसी रहउछि हला यूजर मैनेज्ड पॉलिसी जॉब फंक्शन जोडे जॉब रिलेटेड सब काम करिवो एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस मु जदी एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस देबी तो तार कोन होबो ना एडमिनिस्ट्रेटर फुल एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस तक मिल जियो माने सबु जाका सर्विस रे जो सर्विस सब अछि EC2 माने नॉट ओनली EC2 इंस्टेंसेस जिते भी सर्विस अछि AWS अकाउंट रे AWS रे सबु सर्विस को से एक्सेस करो से पर्टिकुलर अकाउंट रे राइट तो मु जदी चाहेबो देखियो चाहेबे आ कोन पॉलिसी लिखा आइछि
Let's go. Just click on the administrator policy. The policy open the policy टा कौन गोटे document actually policy गोटे documents था से document रे सब policy लिखा ही था particular कौन access आकु required कौन ये करी पारिबो right तो ये policy रो permissions मु जदी देखिया उची भी गोटे JSON file रे एटा open हबो right okay summary जदी summary के हमें देखिबा तो सबु जाक सर्विस देखो full access जितते सर्विस अछि सबुतर full access तो मुझे यदि जेसन फॉर्मेट रे तार जीबी एटा हला एक्चुअली पॉलिसी डॉक्यूमेंट राइट हां जोटारी वर्जन्स अछि पॉलिसी वर्जन तमे देखि परियो लॉगिन करी जोटा पॉलिसी वर्जन अछि राइट स्टेटमेंट अफेक्ट्स अलाउ एक्शन स्टार मींस दिस इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन राइट filtered my special character right special character star means wild card we can say also wild card so special character so star means जेकोन्स माने ऑल जितते सर्विसेज अछि जितते रिसोर्सेज एक्शन ऑल माने रीड राइट डिलीट रीड राइट एग्जीक्यूशंस एंड डिलीट एवरीथिंग कैन डू स्टार एक्शन रिसोर्स मींस ऑल रिसोर्सेज स्टार ओके तो जेसन पॉलिसी राइट तो एटा ना पॉलिसी विषय हम जानिले नाउ लेट्स गो अहेड एंड क्रिएट वन ग्रुप गो अहेड एंड क्रिएट वन ग्रुप तो हमें कोन करिया ये पॉलिसी अछि तमे यदि चाहौ ये पॉलिसी न यूज करी तमे निजरो पॉलिसी क्रिएट करिया पई तो यू कैन गो अहेड एंड क्रिएट अ पॉलिसी ओके तो हमें कोन करबा ना जो पॉलिसी अछि मते कोन अछि सर्वर एडमिन दरकार तो मु चाहौ केवल EC2 एक्सेस आकु दरकार हैला तो मु कोन कहू छी ना EC2 रो फुल एक्सेस जदि तमे चाहौ केवल से ओरे डेवलपर देन यू कैन गो अहेड एंड क्रिएट अ डेवलपर एक्सेस ओनली रीड ओनली परमिशंस तो मु चाहौ फुल एक्सेस EC2 दवा में लेट्स क्रिएट यूजर तो कौन यूजर क्रिएट है सर्वर एडमिन ओके गोटे ग्रुप क्रिएट कर देली बट से यूजर टा एठी ऐड हेइनी वर्तमान पर्यंत हैला सर्वर एडमिन हे जाईची नाउ लेट्स नेक्स्ट रन क्रिएट यूजर ओके यूजर क्रिएट हे गला तो एटा हला तारा कंसोल पासवर्ड जोटा हमें देइथिले डेमो यूजर @123 एटा हला डेमो यूजर B11 तो हमें कोन करबे ना ये कौन दोची कंसोल साइन इन गोटे दोची कंसोल साइन इन तो यही कंसोल साइन इन द्वारा हमें लॉगिन करि पाए राइट तो कंसोल साइन इन को कॉपी कर दियो रिटर्न टू द नाउ ओके एटा हला कोन माने एई लिंक ता तमे दबा यूजर को जोटा कि यूजर तार लॉगिन करि परिबो एई URL नेगरी एई यूजर नेम आ पासवर्ड ताको चाहिबो जदी तमे डाउनलोड करी सेव करिबो फॉर फ्यूचर रेफरेंस तमे डाउनलोड कर दो तो ए जो इंफॉर्मेशन सब अछि डॉक्यूमेंट तमरो CSV फाइल रे डाउनलोड हे जिवो CSV फाइल ठीक अछि डाउनलोड हे गला तो हमें कोन करबा ना रिटर्न टू द यूजर लिस्ट वर्तमान हमें यूजर तो क्रिएट कर देले ग्रुप भी क्रिएट कर देले बट से ग्रुप ता असाइन हेइनी वर्तमान ये यूजर रो बाय डिफॉल्ट गोटे यूजर माने एक्सेस लेवल कोन की can anyone answer what is the default access level of a newly created user my question is let me repeat what is the default permissions access level of a newly created user only read only read only access okay what access that is read only all access नहीं read only अच्छा read only okay हाँ Subhasri बर्तमान एडमिन कोन किछि देइनी ना तो कोन थे बाय डिफॉल्ट कोन रहबो एक्चुअली बाय डिफॉल्ट गोटे जतले हम नुवा यूजर क्रिएट करिवा से यूजर कोनोसी एक्सेस नथिबो the user will not have any single access so हम last class रे पढितले right by default newly created user will not have any access मु जदी ये यूजर को नै कनेक्ट करबी वर्तमान तो मु टोटली कोनोसी सर्विस अकाउंट तो लॉगिन करि परबी बट कोनोसी सर्विस देखि परबी राइट तो वर्तमान कोन होछि ना मु ए यूजर को मते गोटे ग्रुप रे ऐड करियो पड़िबो राइट तो हम केमति ग्रुप रे ऐड करबी सिलेक्ट द यूजर ग्रुप add user to group दुईटा ग्रुप अछि तो मु चाहूची सर्वर एडमिन जो ग्रुप ता में क्रिएट करथिले add user to group एटा लागला मु यूजर को जाई ग्रुप ऐड कली
आउ गोटे है तुम ग्रुप को जाइकरी यूजर ग्रुप्स को जाइकरी ए ग्रुप क्लिक करिकरी एठी तुम कौन करिवो ऐड यूजर भी करि पाइबो हैला आइदर फ्रॉम यूजर यू कैन ऐड द ग्रुप और फ्रॉम ग्रुप यू कैन ऐड यूजर ओके तो यूजर आमे गोटे ग्रुप ऐड ग्रुप रे यूजर ऐड कर देले राइट और ये यूजर रे ग्रुप ऐड कर देले राइट नाउ लेट्स go ahead and log into that user okay ମୁଁ କଣ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରେଭ୍ ବ୍ରାଉଜର ରେ ଲଗଇନ୍ କରୁଛି AWS amazon.com so root user नाम दियो so root user लॉगिन करो नेक्स्ट तो root user ना हलो देला प्लस पास सॉरी नॉट root user तो हमें कोटा यूज करिबा सॉरी वी डोंट हैव टू गो विथ रूट यूजर राइट तो हमको गोटे लिंक मिलितला राइट जोटा कि से लिंक द्वारा हम यूज करिबा राइट okay so when I put that link right user link through that we have to log in so what will happen it will take us to the IAM user login window see এটা কোন কলা না sign in as IAM user तो ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द लॉगिन से कोन कला ना अकाउंट आईडी फेच कला एटा को अकाउंट आईडी जो अकाउंट रे ये यूजर क्रिएट हेची राइट तो ये अकाउंट आईडी ऑटोमेटिकली से नेला IAM यूजर ना डेमो यूजर B11 पासवर्ड डेमो यूजर @123 sign in ओके साइन इन हला बट कोन कहछि ना ओल्ड पासवर्ड जोटा अछि दियो बर्तमान न्यू पासवर्ड सेट करबा हमें कोन सिलेक्ट करथिले फास्ट लॉगिन रे चेंज करबा पई शॉर्ट राइट तो मु पासवर्ड एबी कोन करबी चेंज करबी तो ओल्ड पासवर्ड अथिला कोन डेमो यूजर @123 okay confirm password change तो बर्तमान सी मु कौन कल ना IAM यूजर द्वारा मु लॉगिन कर पाइली बर्तमान हम कंसोल को AWS कंसोल को मु का द्वारा लॉगिन कली IAM यूजर लॉगिन कली तो मु एठी के जीबी एठी कोन अछि अकाउंट आईडी जोटा कि पेरेंट अकाउंट आईडी राइट अकाउंट आईडी IAM यूजर नाला डेमो यूजर B11 बट इट बट एठी कोन करिया हमें कोन दैछे देखो एक्सेस केवल EC2 राइट let's go and check if he is able to access any other services मुझे यदि S3 जाई क्लिक करिबी देखिबा ए यूजर S3 एक्सेस अछि ना नाही राइट कारण हमें ताको एक्सेस देइने हमें केवल EC2 एक्सेस दैछे so first let's go ahead create a bucket जे कौन से bucket ना दे दिया okay go ahead directly create bucket so कौन कोजी fail to create bucket okay to create a bucket S3 create bucket permission is required so create bucket permission because a user पाखरे totally S3 access नहीं the user cannot do anything okay जदी भी bucket अछि user view भी करि परिबन ठीक अछि तो हमें जो buckets को जो तो bucket user पाखे देखो you buckets click कली you don't have permission to list bucket also a user bucket but जदी ये user EC2 instance को जीवो जे कोन सी सर्वर को जाओ टोटल एक्सेस नहीं केवल EC2 एक्सेस यूजर पाखरे अछि राइट तो इफ आई गो टू द EC2 यूजर go to compute EC2 section now this user can view create delete everything can do because it has the server admin EC2 admin access it has the EC2 admin access right so go to accesses server this server is running right anything can do we can create also new server see can create also
new server. So it has only admin access. Now let me go ahead and create another group and change. Let me go ahead, create another group. Create another group. Group name. Suppose I'll give demo user V11 S3. V11 S3. Only S3 access. Okay. Done. Now policy. Suppose only I have to give S3. S3 full access. Suppose I gave create user group. Okay. Create कर देली. बट मु कौन करछि ना से यूजर को जाइकरी जोडा तार सर्वर एडमिन एक्सेस थिले मु सेटा हटे देकरी वर्तमान S3 एक्सेस देबी राइट तो यूजर डेमो यूजर B11 ग्रुप्स रिमूव सर्वर एडमिन रिमूव होइगला वर्तमान किछि नाही राइट यूजर पाखरे किछि एक्सेस नाही राइट तो मु कोन करी वर्तमान जदी लेट्स गो एंड चेक मु रिमूव कर देली सब एक्सेस EC2 ऊपर जिबी क्लिक करी ओके देखो यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन वर्तमान यूजर पाखरे किछि एक्सेस नाही he cannot access any services okay now let's go ahead and add S3 okay before that also let me show you he cannot also access S3 see हम जदी S3 को also जिबी S3 रे भी तार एक्सेस नथिबो कोनसी एक्सेस S3 रो ही तार नथिबो बकेट जिबा see you don't have permission in S3 also so now user does not have any permissions ना S2 EC2 अछि ना S3 अछि ना किछि परमिशन कोनसी सर्विस परमिशन नै तो मु कोन करियो चाहूछ ना मु किछि गोटे परमिशन ताको देई देली राइट तो वर्तमान मु कोन परमिशन दबा चाहूछ मु चाहूछ लेट मी गो अहेड and give a permissions okay change the permissions so user गला तो हमें कोन करबा ना S3 परमिशन ता ताको देई दबा add user to the group तो वर्तमान से यूजर कोन हला S3 ग्रुप को ऐड हेगला now let me go to the user section now let me refresh this मु सेपटे कोन कली ताको परमिशन देई देली S3 परमिशन वर्तमान मु S3 बकेट रे अछि let's refresh it now see the user can see all the buckets now user पाखरे complete access आसी गला S3 रो तो S3 he can only work on the S3 तो यही टाइप रो हमें सब परमिशंस लेवल सेट करबा राइट तो हमें सिखले कोन यूजर केमती क्रिएट करबा रोल केमती क्रिएट करबा पॉलिसी विषय भी जानिले तो एबे लेट्स गो अहेड एंड चेक द रोल्स केमती क्रिएट करबा आ रोल्स कोन पाई दरकार ओके तो रूल्स हमें बेसिकली हमें जानिथिले कोन लास्ट क्लास रे रोल्स पढिथिले रोल्स हमें कोन पाई यूज करबा तो बेसिकली बेनिफिट रोल्स कोन पाई हुए ना हमें यूजर आईडी और क्रेडेंशियल्स को मने रखिबा पड़िबो प्लस ताको कोनसी जगह रे सिक्योर प्लेस रे रखिया पड़िबो कि सेट करिया पड़िबो तो सेट गोटे काइंड ऑफ तुमको माने कोन सिक्योरिटी ब्रीच हबार चांसेस रहता है कारण सिक्योरिटी मिस हैंडिंग हबार थाए कारण कोनसी बाय चांस किछि माने सिक्योरिटी लीक हे गला तो सिक्योर आईडी यूजर आईडी का हाथ पड़ियो तो से माने किछि भी कनेक्ट कर पारिबो किछि भी कर पारिबो राइट तो ताकू एडेबा पाई दैट प्रॉब्लम टू रिमूव दैट प्रॉब्लम so what we can do we can just use a role तामाने हमें role based authentication ताकू कुआजिम role based authentication बा role based connectivity तो role based connectivity माने तमे गोटे रिसोर्स को कनेक्ट करछो तमरो जो रोल पॉलिसी अटैच कराई छै सही हिसाब रे तमे एक्सेस पाई राइट तो एबे कोन होला हमें जो लास्ट क्लास रे करिथिले जो बकेट रेप्लिकेशन करिथिले क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन गोटे माने कोन बकेट रु गोटे रीजन रु आ गोटे रीजन को प्लेस करथिले तो सेति पई को हमें कोन गोटे रोल क्रिएट करथिले से रोल ता वर्तमान देखो एटी क्रिएट हिच राइट रोल तो ये रोल को हमें जदी जिबा ये रोल रो कोन परमिशंस दिया हितला सेतना मु सेट करथिली रोल रो जदी परमिशंस लेवल को जिबी कोन परमिशन होछि पॉलिसी नेम S3 CRR फॉर डेमो तो मैं पॉलिसी जतो चेक करिवि ए पॉलिसी रे कोन थिबो ना से पर्टिकुलर S3 एक्सेस ताको दिया हितला राइट परमिशन लेवल सी
सर्विस कौन एक्सेस अछि S3 एक्सेस लेवल लिमिटेड लिस्ट परमिशन मैनेज रीड राइट ये सब एक्सेस ताको थिला राइट तो सही परी पुणी जति मु रोल्स को जीवी सो रोल रे कोन होची ना गोटे रोल तमर बेस्ड ऑन द रोल्स तुमको गोटे पॉलिसी अटैच कराई था से पॉलिसी रे पॉलिसी कोन थाए ना सेट ऑफ रूल्स आउ एक्सेस लेवल सेटअप कराई था बेस्ड ऑन द रूल्स आउ एक्सेस लेवल तुमको सही हिसाब रे तुमको एक्सेस मिलिबो तो वर्तमान हाउ टू क्रिएट ए रोल लेट्स गो अहेड एंड क्रिएट ए रोल तो कौन तुम करबा चाहछो से रोल रे AWS सर्विस करी एक्सेस दबो कि वेब आइडेंटिटी दबो कि सामल 2.0 फेडरेशन कस्टम कि किछि भी दबो सपोज मु चाहछो AWS सर्विस हला नाउ लेट्स गो यूज केसेस सपोज ओनली कैन एक्सेस ये सब सर्विस अछि को सर्विस को तमे रोल एक्सेस दबा पई चाहछो कौन सी सर्विस को तमे एक्सेस करबो थ्रू रोल देन यू कैन सिलेक्ट व्हाट सर्विस ओके तो मु चाहूँ केवल EC2 लेट्स सी EC2 ओके सो EC2 रो कोन ला चूज ए यूज केस फॉर द स्पेसिफाइड सर्विस को टाइप रो यूज केस तमर दरकार हमें सिलेक्ट करो EC2 allow EC2 instance to call AWS services on your behalf ओके सिलेक्ट नेक्स्ट बस ये सब पॉलिसी तमे अटैच करिवो फर्स्ट रोल क्रिएट करले रोल नाटा हमें देले कौन सर्विस यूज कराबो से सर्विस रे कौन कौन पॉलिसी सब अछि तमे से पॉलिसी सेट करिवो सपोज आई वांट टू सिलेक्ट दिस पॉलिसी ओके एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस नेक्स्ट रोल नेम माय रोल समथिंग डेली ओके सो एटा हला तार एंटायर पॉलिसी सेट कराई छी हला एजेशन फॉर्मेट रे पॉलिसी तमे देखियो ये वर्जन ता 2012 10 17 कोन अक्टोबर 2012 वर्जन ता ये वर्जन ता तुम्हें यूज करियो पड़िबो ये वर्जन बाय डिफॉल्ट एटा आसुची राइट हला परमिशंस टैग दलो नाउ क्रिएट रोल तो वर्तमान ये जो रोल ता हमें यूज क्रिएट कले राइट वी क्रिएटेड वन मोर रोल कॉल्ड माय रोल तो ये रोल ता केवल हमें EC2 सर्विस कनेक्ट करबा पई यूज करि परबा तो कोठी तो मु बतेम जतला हमें AWS CLI इंस्टॉल करी के प्रैक्टिस करबे सेतोले रोल केमती यूज करो ऑलरेडी हमें चेक करिचे केमिति S3 रोल ता केमिति यूज करा हबो एक्सेस करबा पई S3 सर्विसेस राइट सेमती माय रोल जोटा मु क्रिएट कली केवल EC2 को केमती कनेक्ट कराबो बतै देली राइट तापरे पॉलिसी हमें जानले आइडेंटिटी प्रोवाइडर जोटा कि आइडेंटिटी तमरो आइडेंटिटी कोन कोची यूज एन आइडेंटिटी प्रोवाइडर टू मैनेज योर यूजर आइडेंटिटी आउटसाइड ऑफ AWS तमे आउटसाइड ऑफ AWS छडा तमे आउ कोनसी सर्विस यूज करूछ तमे AWS आइडेंटिटी प्रोवाइडर यूज कर पाइबो अकाउंट सेटिंग्स जो कोन कोन अकाउंट सेटिंग्स रछि तम पर्टिकुलर अकाउंट सेटिंग्स रे सेटिंग्स करिवो एक्सेस एनालाइजर माने एनालाइज करिवो माने बेले बेले गोटे गोटे यूजर पाखरे को लेवल रे एक्सेस तमे धरो गोटे यूजर 10 वर्ष लानी गोटे ऑर्गेनाइजेशन काम कलानी तो 10 वर्ष भितर से गोटे दुईटा माने प्रोजेक्ट काम करथियो या चारटा प्रोजेक्ट काम करथियो तो बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट रे ताक किछ एक्सेस मिलिथियो तो सही एक्सेस लेवल ता कोन होय ना प्रत्येक वर्ष या प्रत्येक प्रोजेक्ट चेंज कला गोटे ऑडिट हुए ऑडिट रे एनालाइज करा जाय को लेवल एक्सेस ए यूजर को अछि आ से एक्सेस ता ताको हटा जाय ओके सब बेले सिक्योरिटी रिस्क कैलकुलेशन बा रिस्क असेसमेंट जतले करा हुए रिस्क असेसमेंट रे यूजर एक्सेस लेवल भी चेक करा हुए तो यूजर एक्सेस लेवल रे कोन हुए तमरा चेक कराबो वेदर दैट यूजर हैज एक्स्ट्रा एक्सेसेस बियॉन्ड हिज रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी तार जो रोल्स और रिस्पांसिबिलिटी दिया आइछि ताटो किछ एक्स्ट्रा एक्सेस अछि कि जदी एक्स्ट्रा एक्सेस अछि से कोन करबे देखो डिलीट माने डिलीट कर देबे पर्टिकुलर जो एक्सेस दरकार है धरो तमे गोटे डेवलपर तम पई जहां एक्सेस दरकार सेति की रखबे बाकी एक्स्ट्रा एक्सेस तो सपोज प्रीवियस प्रोजेक्ट टू इनहेरिट हेची तो ताकू कोन करबे ना समान डिलीट कर देबे राइट तापर कोनी सेव कर देबे तो सेतले एक्सेस एनालाइजर एक्सटर्नल एक्सेस किछि अछि चेक करबा पई यूज्ड रिपोर्ट सब ये सब रिपोर्ट जनरेट करबा क्रेडेंशियल रिपोर्ट सब चेक करबा पई ओके तो IAS ऊपर कंप्लीट लैब तमे हमें जानिले तो मु तुमको एडवाइस करबी सजेस्ट करबी तमर जो डॉक्यूमेंटेशंस मु तुमको बतैतली IAM रो जो डॉक्यूमेंटेशंस फुल डॉक्यूमेंटेशंस AWS रो ताकू तमे देखो पढो ता सहित CLI इन्फॉर्मेशंस ता जोटा अछि तेटा भी देखो त हमें नेक्स्ट क्लास रे कोन करबा EC2 इंस्टेंस ऊपर पढिबा सर्वर क्रिएशंस ऊपर और सर्वर क्रिएशन सरिला परे मु तुमको AWS CLI विषय भी बतै देबी
ओके तो सर्वर क्रिएशन मोस्टली हमको मोस्ट प्रोबेबली दुईटा क्लास लगे सर्वर क्रिएशन मोस्ट प्रोबेबली हमको दुईटा क्लास लगे सो दुईटा क्लास रे हमें सर्वर फर्स्ट बेसिक टा कोनी के पूरा EC2 instances will take more than 2 weeks of time दुईटा कंटिन्यूअस जदि हमें EC2 पढ़ियो EC2 बहुत अच्छी जानबा पाई बट वर्तमान पाई तुमको जेति की दरकार एति की सारी के हमें कारण डेवलप्स को जंप करबा राइट सिखिबा तो हमें EC2 इंस्टेंस रे जो सर्विसेज अछि फर्स्ट हमें केवल लाइनक्स मशीन क्रिएशन कारण सही मशीन क्रिएशन द्वारा हमें कोन करबा ना डेवलप्स सब टूल्स इंस्टॉल करबा राइट तो बेसिक EC2 इंस्टेंस कोन ता डिस्टेंस टाइप सब कोन सर्वर विषय रे कोन सब बते देबी ता सहित बेसिक लाइनक्स सर्वर क्रिएशंस भितर बताबो तापरे आमे से सर्वर रे केमिति सब एप्लीकेशन इंस्टॉल करिबा डेवऑप्स टूल्स इंस्टॉल करिबा ता विषय रे मु बतेबी तापरे धीरे धीरे आमे EC2 रो बाकी सब ऑप्शंस गुरा बाकी सब सर्विसेज EC2 भितर जा अछि धीरे धीरे आमे नेक्स्ट पढी नेक्स्ट क्लास रे पढिबा सेति बडे जतोले आमे फर्स्ट बेसिक EC2 करि सली ता सेतोले आमे AWS CLI करिबा जोटा कि AWS CLI हला AWS CLI माने लाइन इंटरफेस राइट कमांड लाइन इंटरफेस तो कमांड लाइन इंटरफेस हमें केमती कनेक्ट करबा तो सेते बेले हमें सब कंप्लीट रोल्स आ यूजर एक्सेस आ थ्री भी देखिया पड़ियो तो मु जोरा वर्तमान लास्ट क्लास काली रो क्लास रे प्लस आजिर क्लास रे जहां भी पढ़ायला ताकू सब तमे मन रख कारण टिकी निकी जहां भी तमे पढुछ राइट सेटा ही तुमको क्वेश्चन पचारि पारंतु आ सेटा ही तुमको काम कला बळे भी काम रे आस जतो तमे प्रोजेक्ट करिवो कि किछि सेटअप करछ then you need that things or you need that options to remember okay